Hi, hi Akash. So we are live now, and I welcome all our viewers to another session where we would be sharing the strategy of topper. Today, I have with me Mr. Akash Kumar Singh, who has recently cleared NABARD Grade A 2021 exam. Akash, first of all, welcome to this channel. I'm really thankful to you to take out some time from your hectic schedule and be present here to share the strategy with the aspirants of NABARD Grade A. Good afternoon, sir, and I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this platform and to interact with the aspirant, and they can learn from my journey as well. And I'm very much thankful for you for giving me an opportunity to speak. Thank you, Akash. It's my pleasure. So let me introduce Akash to you. So Akash Mathura से है, the place where Lord Krishna was born. आकाश एक नॉवलिस्ट हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे और हैं, और अभी ये नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर भी हैं. सो आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? सच कहूँ तो अभी आई कैन नॉट फील एनीथिंग. अभी तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आई हैव क्लियर्ड द नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम. Because in the past 3.5 years or 4 years, I have been struggling through, and I was in the phase of preparing. So it is not easy to digest. I think once when I join the institute, when I go to the training institute, then I think I would be able to feel that I have actually made it. Actually, I have gained something in life. Yes, I think then you will get that feeling, that moment of proud when you will be present there and you will be given a tag of NABARD Grade A officer. I think Yes. that's very well deserved job anybody can dream of, and uh, I I mean, I know that feeling of relief must be there right now. कि ठीक है, after so much struggle I've reached somewhere. Exactly. That is there because I do remember very well in December, I was so frustrated and depressed, and I was so much in dilemma that what should I do, whether I would be able to clear any exam or not. That I even applied in your institute so that I can be a teacher there. And so it is a part and parcel of the process that everyone has to go through, that I have learned throughout my journey. And I think it is must if you have to reach somewhere. So Akash, when you were frustrated, when you were demotivated, and that's normal, that happens with everyone, even with the most successful persons. What was your dose of motivation, or what used to be a stress buster at that point in time, so that next day you can get up and say to yourself, hey man, no matter what, i am Uh, i am going to win? I do remember. I would like to two quotes here. One is Miss Anu Kumari ma'am is there. I watched her interview, and she said, "You have to always uh, face the hardship, and you have to always face the hardship either of regret or of hard work. Then, and you have to choose either of the one." And the second one that has always been in my mind is patience, perseverance, and dedication. Without these three things, I think it would not be easy to be on the place that one wants to be. Very well said. I think I love those lines, that hard work या regret दोनों का जो एक आपने क्या वर्ड यूज किया था? हार्ड वर्क या रिग्रेट, इन दोनों का वी हैव टू बियर द पेन, या तो हार्ड वर्क का या रिग्रेट का. बियर द पेन, दैट्स वेरी वेल सेड. बस ये है कि पेन रिग्रेट की बियर करोगे तो शायद बाद में खुशी नहीं मिलेगी, बट हार्डवर्क की पेन बियर करने के बाद कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो जरूर मिलेगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट. लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर इन इंडिया फॉर every damn job. Prakash, how did NABARD happen? I mean, you were UPSC aspirant. You had already written, I think, some names of UPSC. 2-3 years आपने उसमें लगा दिए थे. तो NABARD का आइडिया कहाँ से आया, और is it only NABARD you were interested in, or you also applied for other regulatory bodies like Reserve Bank of India and SEBI? I would like to be truthful here. Actually, after giving 2020 mains of state PCS and UPSC, and I could not make it to it, and better to say, I did not receive the interview call. Then I was so frustrated because financial independence is must at this stage. I am 25 years old now, and I was searching for the avenues. I tried to fill each and every form that I
I was thinking that I can clear, but unfortunately I could not met, or it better to say destiny or having some different plan. So one day, one of my friend told me that there is a form, there is a body like NABARD. It is one of the best organization where you would be able to give your best. Whatever you are learning in the UPSC phase, that would be utilized more in a more better way in NABARD. Even if you do not get through the UPSC, then I went through the notification and all. And luckily, I was lucky and I was so happy when I saw the notification and I realized that the syllabus and the pattern has changed drastically in the same year, and it got streamlined with the UPSC syllabus and pattern. So I was so relieved. And in one instant, when I looked at the notification, I said, yes, I can do it. I think I would be able to make it in first attempt only. That's great. I think that's blessing in disguise for you. Pattern change is something useful for guys like you. Now tell me about 3 things that you think that are the key, at least for you, when it comes to tasting success in NABARD. 3 things. That can be anything. I have already told you patience. It is must. Perseverance when there is no way of hope. When there is darkness, then also you have to do hard work, perseverance and dedication. Without dedication, patience and perseverance is of no use. That I have learned and that I have applied to my throughout journey. Fine. Patience, perseverance, and dedication. Hard dedication. Work. Patience for that our turn will come at one day. Did any point in time you thought that, no, being from a non-agriculture background, I mean, it would be really difficult for you to crack NABARD Grade A, or you were really hopeful right from the start that this is in my domain and I can crack it? Actually, mains area was in my domain. Interview area was in my domain. It was the prelims that was haunting me. But then I gave enough time to know it better. I went through the previous year cutoff and all. Then I realized that you don't need to get 100 marks out of 100 or 90 marks out of 100. You just have to get approximately 50 to 60 marks to get into the list. And then I thought it is better to give your more focus on ESI, in which you are strong enough, and GABARD. And in ARD, even without reading, I was thinking that I would be able to clear at least 10 questions. That's how I went, and it worked well for me. But I was not sure about prelims whether I would be able to make it or not. It was haunting me. But when result came, I took a relief. Okay. So since you were talking about phase 1 and phase 2, I mean, in brief, that phase 1 was a pain point for you. So let's talk about phase 1. So what was your strategy for phase 1? How many months did you prepare, and what were the focus areas for you when it was about phase 1? Actually, in October 2021, UPSC prelims is going to happen. But before 10 days, UPSC released 2020 mark sheet. Then I realized that I will not give UPSC this year because I have to change my optional. Because optional was the subject that made me to not get the interview award. After that, 1 month was there. I think before that 1 month, 18th of September was prelims. So I did not prepare anything separately for the NABARD because I was already going through the process for UPSC. And I think UPSC preparation is something that covers almost every area. So I was able to do, but if I have to quote few things, then I have penned it down so that anyone who want to know can. Please. See, reasoning, English and quant. That was my portion in CSET. For that area, I solved 10 to 20 questions daily. And I think that would be enough because in CSAT also we have to clear the cutoff, and that in here also we have to clear the sectional cutoff. So 10 to 20 questions would be enough. And if we do not have any source, then जो previous year questions हैं regulatory bodies के, they are वो बहुत है, sufficient है. अगर सबसे पहले हम उनको solve करके अगर एक strong hold अपनी position पकड़ लेते हैं, then computer knowledge was something in paper जब मैं solve कर रहा था तो I was literally shocked कि I was thinking कि इस level का computer level भी आ सकता है. So I would tell the viewers कि please give your sufficient time to computer knowledge क्योंकि अच्छे level का आएगा. मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ. And then was the decision making. It was easy for me.
बहुत से लोगों के लिए बहुत टफ रहा था, बट इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज सीसेट के लिए ऑलरेडी मैं 2 साल से डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं एक इन वन गो आई वाज एबल टू पिक इट आउट। यस यस, बट गिव योर सफिशिएंट टाइम टू डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये पूरे जो सेक्शनल कट ऑफ वाला एरिया है, इसमें यही 2 एरियाज हैं जो आपको इन करेंगे आउट करेंगे, जो मैंने रियलाइज किया थ्रू द प्रोसेस। देन टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग स्पेसिफिकली, अलग से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके लिए, बट आई एम न्यूज़पेपर नर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग देख रहे हैं वो ना पढ़े, मैं न्यूज़पेपर नर्ड हूँ। मेरा दिन सुबह 2 न्यूज़पेपर से नीचे शुरू नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़पेपर मेरे आराम से 8-10 क्वेश्चन आराम से करने लायक था। प्लस मैं पीआईबी भी पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उसका एनालाइज करना 3 घंटे के आसपास मेरा जाता था, 2.5 से 3 घंटे। देन टॉकिंग अबाउट ईएसआई एंड एआरडी। in ARD, static portion I did not read, but जो current का schemes वगैरह है, ये सब मैंने जो prepare किया, that is from PIB. No, nothing can match PIB, but हाँ, nothing can match PIB, but जो PIB है वो बहुत vast है, उसको handle करना बहुत मुश्किल है। तो I would say कि anyone can refer any of the institute notes, compilation, even EduTap material can also be referred. Any material, I do believe in make any one material as your base and then add to it as much as you can. Read as much source as you can, but जो ARD का जो भी आपका बेस मटेरियल है उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। Social sector should be focused on, financial sector, financial inclusion and all should be focused. There is one thing that I think should be more focused, that is like schemes related to insurance and all, like Atal Pension Yojana and all, that comes in rural development, because हम क्या कोशिश करते हैं कि we are trying कि जो rural development के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ पाए। That's all for prelims that I did, nothing else. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में आपने बताया। I'll try to ask some follow-up questions. सबसे पहले तो आपने जो जीए की बात की, या फिर ईएसआई में भी जो करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं, वो दो यू आर ए न्यूज़पेपर गाय, आपने न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ते रहे, बट नाउ लुकिंग बैक व्हाट वुड बी योर सजेशन कि अगर किसी को मैगजीन्स पढ़नी है या न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, कितने महीने तक पुराने क्वेश्चन आते हैं? आई थिंक जो स्कीम्स वगैरह हैं वो 2014 से हमें फोकस करने पड़ेंगे सर। 2014 से जितनी भी स्कीम्स आई है, मीन्स द जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से, स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्शन जितनी भी स्कीम है, दैट वी हैव टू लो। इससे पहले की स्कीम पे अगर हम ना फोकस करें तो भी चलेगा। सेकेंड थिंग, न्यूज़पेपर के अलावा भी मैंने बहुत टाइम दिया है ईएसआई वगैरह के, लाइक पीआईबी को बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, पीआईबी के कंपाइलेशंस पढ़े हैं, एंड रिपोर्ट्स जो आती हैं स्पेसिफिकली लाइक आरबीआई की ऑन दैट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ऑल, लाइक वन रिपोर्ट वाज देयर, जो इंडेप्टनेस है फार्मर्स की वो फॉर्मलाइज हो रही है, and that report was of RBI, and that was the same question that I saw in the mails, and it was really easy for me to write the points tick tick tick. That's how I went through. So it is not like that I haven't read reports and all. It would be better if you can read as much as you can, whatever the authentic source that one can read. डिसीजन मेकिंग के लिए जो आप पढ़ रहे थे सीसैट के लिए, उसके लिए कोई सोर्स आप बताएंगे बच्चों को दैट दे कैन रेफर फॉर नाबार्ड? Decision making के लिए I cannot tell the source, but I can tell one thing. There would be 4 options in decision making, and I am damn sure 2 options would be either too extreme or too vague that can be eliminated. I am damn sure. It is all about you have to choose between the 2 options, and even if you have given a little bit of your time and you are following eliminating 2 options, then it would be easy with that. I think so. Yes, I think I also agree with the same. क्योंकि बहुत बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे माइंड को तो वो हो सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। क्वांट और रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो की थी आपने? नहीं, बेसिक ओनली 10 to 20 to 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस, कहीं से भी कोई भी सोर्स। अब किसी के पास सोर्स नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट सोर्स, बिकॉज आरबीआई के हैं, नाबार्ड के हैं, सेबी के हैं, लाइक अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन,
From there one can start, I think. और व्यूअर्स को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पता है आरबीआई नबार्ड सेबी के, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरबीआई नबार्ड सेबी के पिछले 5 साल के विद सोल्यूशन एनालिसिस मिल जाएंगे। बट कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो दे कैन टेक गाइडेंस ऑफ द एनी क्वेश्चन, स्पेसिफिकली एडुटैप कैन आल्सो बी वन ऑफ देयर सोर्स, बिकॉज खुद करने में और एक गाइडेंस में थोड़ा फर्क होगा। आई डू बिलीव इन दिस। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन एंड योर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पॉइंट टेकन। फेज 1 में जो आपने ईएसआई या करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, फेज 2 वाज इट different from phase 1? Because there is no syllabus for phase 1, so basically people believe that ESI and ARD, what you study for phase 2 is similar for phase 1. So in your opinion, is there any difference apart from that descriptive writing portion? Content wise कुछ difference है phase 1 और phase 2 की ESI ARD की preparation में? Yes, so one major difference that I saw was prelims was more on static portion, that either you know or don't. But in mains, ESIC, MCQs, I saw that you have to apply your mind. Without applying your mind, you cannot do. Out of, I think 30 questions were there, 15 to 18 questions, you have to apply your mind. I realized this. So you mean that they were conceptual? Yeah, conceptual, definitely. Means whatever the knowledge you are having, you have to apply it. So then only you can get the answer. और ESI के स्टैटिक पार्ट के लिए आपने कितना पढ़ा था? क्योंकि स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. You would have already studied those topics for UPSC. Exactly. I have already studied and I am thorough about it. I was not having any problem. But the thing that was haunting me, I already told you in prelims, was agriculture section. For that, I saw even your videos. I referred your videos, few videos, but I could not complete all of them. जितना हो पाया मैंने किया था इस आपकी वीडियोस से, कुछ एक दो क्वेश्चंस उससे हो गए थे मेरे. Good. So I'm really happy that we could be of some help in your selection. आपका तो बहुत बड़ा हेल्प रहा है. Thank you. और अगर मैं बात करूं अभी कमिंग बैक टू करंट अफेयर्स, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जाम, और आई थिंक आपका सिलेक्शन भी करंट अफेयर्स के बेस पे ही हुआ है, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन आपने मतलब पढ़ा हुआ था और एआरडी पे आपने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया. करंट अफेयर्स बट वाज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि you were reading newspaper almost on daily basis and 2 newspapers you said. So current affairs बहुत वास्ट है. सबसे पहले तो one of the major problem is के इतने करंट अफेयर्स पढ़ के उसको याद कैसे रखें. तो आप न्यूज़पेपर पढ़कर कुछ नोट्स बनाते थे अपने, या उन न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट करके बार बार पढ़ते थे? मतलब उसको याद रखना, रिवाइज करना, व्हाट इज द ट्रिक? टेल मी आकाश अबाउट इट. I would little modify it. Actually, as I told already, we have to get 55 to 60 marks. It means we have to find our weakness and strength. My strength was ESI, first of all. And luckily, if as far as I do remember, I was able to solve 34 to 35 questions out of 40. Means 35 questions was done in 35 ESI. And then talking about ARD section, I was sure from agriculture static section, out of 40, they would maximum ask 10. Means I have to focus on rural development for 30 questions. And out of 30 questions, I was able to do 18 questions are means that I have already planned and I have to take the risk. वो जो मैंने risk लिया. Then came to the GA part. GA part जो है मेरा, even though I was reading newspaper, but it was not as much strong, क्योंकि बहुत सारे facts होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो याद रखना बहुत मुश्किल होता है. उसके लिए जस्ट एक ही ट्रिक है, रिवाइज एज मच एज यू कैन, और उसको जितना आप कम से कम रख सकें उतना कम रखो, क्योंकि जितना आप आगे उसको वास्ट करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा. यू हैव टू ट्रस्ट, जो भी आप सोर्स है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो मैसेज यही है, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, दैट्स द मंत्र फॉर करंट अफेयर. सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन. वेल सेड. और करंट अफेयर्स में थोड़ा और अंदर अगर हम जाएं, आकाश, there is a portion on schemes which is asked in the exam. You said social sector की scheme, financial inclusion की schemes पूछी जाती है. Can you elaborate more on that? In social sector, I mean, what are the main topics like health, education, poverty, etc.? What were the areas where there is a more probability of scheme being asked in the social sector?
अगर मुझे एक स्टेटमेंट में कहना है तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है स्कीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सेंस जो ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी के जो पेरीफेरी पर हैं, जो उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही हैं, वो सारी ही स्कीम बहुत जरूरी हो जाती है। एंड मतलब दीज आर, हाँ दीज अगर आर द अगर स्कीम। अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आई जस्ट ट्राई टू एलेबोरेट, मतलब एनी scheme for girl child, any scheme for poor people, any scheme for women, any scheme for widows, any scheme for elderly, any scheme for unemployed rural unemployed youth in India, uh, any scheme related to education sector of India. तो जो भी स्कीम, मतलब बेसिकली द स्कीम विच इज ट्राइंग टू हेल्प पीपल ऑन द पेरिफेरी और इज ओवरऑल हेल्पिंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट स्कीम इज इम्पोर्टेंट। हाँ बट अगर इसमें भी कुछ सेग्रीगेशन करना है तो सबसे पहले जो हमें फोकस करना है, देयर आर फ्लैगशिप स्कीम्स like प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is there in agriculture sector for insurance sector, for insurance purpose, and then soil health guard is there। मीन्स अगर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2014 के बाद कई सारी स्कीम्स आई जो होलिस्टिकली एक ही चीज को टारगेट कर रही है, दैट इज फार्मर। इधर इट इज फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना, लाइक दिस। दीज आर ऑल द फ्लैगशिप स्कीम। So agriculture से related schemes और भी important हो जाती हैं because that is the core area of NABARD. Yes, exactly. Exactly. So message from Akash is very clear. Schemes related to agriculture and farmers are number one priority. Apart from that, when it comes to social issues, social sector schemes like which basically wants to bring people in the mainstream population or mainstream economy of India, like poor, underprivileged children, widows, गर्ल चाइल्ड, उन सभी एरियाज में जो भी स्कीम्स हैं, एजुकेशन हेल्थ, वो आपको अच्छे से करनी होगी। दैट्स गुड आकाश। one thing I would like to add on it, if अगर किसी को कंफ्यूजन है इसमें, then जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत अच्छा दिया गया है। मेंस के सिलेबस के एक एक पॉइंट के लिए भी अगर आप स्कीम्स ढूंढना शुरू करोगे, सर्च करोगे, देन आई थिंक आपका 70 to 80% एरिया कवर हो जाएगा। एक एक पॉइंट लाइक पॉपुलेशन इज देयर, like financial inclusion is there, in a fisheries, livestock, each word is specifically written। अगर उसके ऊपर भी अगर कोई शुरू करेगा, then I think it would be covered holistically। Well said, well said. Abhishek, now moving on to the descriptive part, objective में आपने बता दी already current affairs, and main point शायद यही है कि one source multiple revision is the key। बाकी वो तो आपको पता लग ही जाएगा क्या आता है if you see the previous year papers, but कैसे पढ़ना है वो आकाश ने बहुत अच्छे से समझाया। Now coming on to the descriptive part, Akash, which obviously was your strength since you have written UPSC mains, but still preparing descriptive for agriculture might be a little hectic task, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था मैंडेटरी व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, और ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो आई थिंक इवन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज maybe if you had a geography option or something like that you would have known that, but normally हम उसको नहीं पढ़ते हैं ऐसी चीजों को, ना ही न्यूज़पेपर्स में, ना ही अपने करिकुलम में। सो आपने सबसे पहले बताइए वो मैंडेटरी क्वेश्चन कैसे टैकल किया? हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट या फिर आपने भी कुछ बना के लिख दिया? टू बी ट्रूथफुल, कुछ बना बुन के ही लिखा है मैंने, बट आई एम श्योर कि वो बना बुन के लिखने वाला भी इतना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि लाइक मैं शुरुआत से बता देता हूँ पूरा कि ये जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है, इट इज अ स्किल दैट आई हैव लर्न। ये स्किल है, आपको लर्न करनी पड़ेगी और ये लर्न होगी प्रैक्टिस से। एज मच एज यू डू प्रैक्टिस आप लर्न कर लोगे। तो मुझे आंसर लेखन जो कहते हैं, आंसर राइटिंग जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो चुका था। इवन इज इट ऐसे और ऐसे whatever, and to be truthful मैंने इसके लिए अलग से नाबार्ड के लिए कोई प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था, ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, तो मैंने अलग से टाइम देना सही नहीं समझा। बट मेरी आंसर स्किल अच्छी हो चुकी थी। लाइक क्रॉस ब्रीडिंग के लिए आपने कहा कि इसमें क्या लिखा आपने, तो अगर जनरल कंसेप्चुअल माइंड से भी सोचेंगे तो 10th क्लास में भी वी हैव रेड लाइक क्रॉस ब्रीडिंग इन टर्म्स ऑफ flowers, like cross pollination and all that can also come, like newspaper reading में हम पढ़ते रहते हैं, there is a CRISPR technology,
if one is going through the newspaper, then उनको पता चलेगा. Like Sunday में every Sunday in the Hindu articles आते रहते हैं, कहीं ना कहीं वहां से point मिलते रहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के. like मॉस्किटो जो हैं उसके लिए हम क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं so that हम उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें. तो लाइक दैट आई वाज हैविंग आइडिया, देन आई ट्राई टू, मैंने कोशिश किया कि मैं उसको किस तरीके से अरेंज करके लिख सकता हूँ सो दैट एटलीस्ट आई कैन गेट डिसेंट मार्क्स. बिकॉज आंसर को लीव करना और कुछ लिखना दोनों में बहुत अंतर है. एंड ये जो रियलाइजेशन है मुझे यूपीएससी से हुआ है एंड स्टेट बीसीएस से हुआ है. बिकॉज एक एक जो क्वेश्चन मैंने पीसीएस में छोड़ा था हर पेपर में, that was the reason I did not get interview call for PCS, state PCS specifically. I think 2 या 3 मार्क्स से specifically मेरा रुका था, इसीलिए मैंने कहा कि you have to write. That's it. तो मतलब you are saying that with common knowledge, presence of mind, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है attempted, and इतनी बड़ी बात नहीं है because that's a difficult question for many, and if you can attempt it decently you will get good marks. Exactly, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए. कंपटीशन लगभग बराबर है, बट ये है कि कोई ना कोई लिख रहा होगा उस आंसर को. अगर वो 5 मार्क्स ले रहा है तो आपको भी 5 नहीं तो 4 चाहिए out of 15. For that you have to write. For that you have to apply your mind. I think this is. तो स्टूडेंट्स पैनिक मत कीजिए, एग्जाम टफ है तो सबके लिए है, एंड गिव योर बेस्ट. दैट इज द मैसेज आकाश से. आकाश, वर्ड लिमिट के बारे में आई वांट टू नो. वर्ड लिमिट आई थिंक नबार्ड ने कुछ दिया था एग्जाम से पहले या नहीं? एग्जाम से पहले तो वर्ड लिमिट नहीं दिया था. एग्जाम में जब when we were typing then only we came to know 600 words, 450 words and all. उससे पहले तो कोई नहीं दिया. So did you breach that limit or did you wrote within that limit, या उससे कम लिखा? क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है. हर क्वेश्चन में 15 मार्क के 600 वर्ड्स लिखना शायद सबके लिए पॉसिबल ना हो. आपने शायद लिख दिया हो, बट ओवरऑल आपने वर्ड लिमिट पूरा मीट किया था या कम लिखा था या ज्यादा लिखा था? See sir, there is two things I would like to quote here. One is plus minus 10% is allowed in every examination that I have learned in the process. Second thing, if you are writing less also, but your content should be rich enough that you can get marks. Means if you are writing 400 words in 600 questions, then those 400 words should be the crisp knowledge. Otherwise, I think you would not get marks. That is what I have learned. आकाश, आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है. थोड़ा जो इनपुट माइक है उसको थोड़ा आगे रखेंगे. थोड़ा ब्रेक हो रही है. Earlier it was okay. Anyways, we will continue. Let's see. I think it will improve maybe by next 30-40 seconds. ठीक है. So just a minute. Can you give me 1 minute? Yeah. Just 1 minute. Yeah, Akash. Yeah. Just see. Earlier it was working very fine. अभी recently ब्रेक नहीं हो रही है, फट रही है थोड़ी. मतलब I hope you can understand what I mean by that. I think now it would be clear. Now it's perfectly fine. So Akash, ठीक है. So if guys were not able to hear, Akash is of the view के word limit है, but it's more important to write quality rather than quantity. So quality अगर अच्छी भी होगी, word limit ऊपर नीचे होगा, so still you will be able to fetch good marks. And Akash, any strategy to write answers, whether you should write in points or paragraphs or it's like random के जैसा question है वैसे आंसर कीजिए? I think it is better to answer in paragraph plus points. Because points लिखने से आपको जो enrichment है वो ज्यादा हो पाती है. Like in single in 5 to 6 words point you can give more message. I do think, because in paragraph writing you have to like in detail. But still, if I have to give the strategy for how one should deal with the questions and all, then I have made it all. I have followed only one strategy that has helped me throughout the process, either in whether it is essay or answer writing. Try to make dimensions. Dimensions in the sense political, social, international, ethical, or any more dimensions, and whichever you can add. Like if we take the example of education, then political dimensions would include like, is there any hello? Yeah, Akash. Yeah, carry on. Yeah.
like in education sector, if we talk about in political dimension, we'll start with constitutional provision is there or not, legal provision like right to education or not, any policies, any example that you can quote. Then political hurdles can also be quoted, like education is in concurrent list. So like we used to read in newspaper, language is the core issue, like in South and North India. Then we'll talk about the social, how education can help in social dimension, family, kinship, value making and all. International, is there any international efforts going on like UNICEF and UNESCO? Like that, we can make dimensions, and if one is not having any idea about how to start, then he or she can start with these dimensions. And I think he or she would be easily to he would be easily to able to write 600, 700, 1200 words, easy to do. Fine. I think that's a very good idea. Very good idea. And I think that's very unique that I have listened from somebody that you touch upon different dimensions: social, political, legal, international. And by that, I think you will be able to do very good justice to the question and show your perspective on different parameters. That's really good, Akash. I think that is the reason you must have scored really good in descriptive. I think so. I'm hoping so. And one thing I would like to add for descriptive, please read Kurukshetra magazine, because the Kurukshetra magazine will broaden your horizon. And I think one question at least you'll get from Kurukshetra. Like, I don't know, I was lucky or what it was. When I was going to give the mains examination, there was one Kurukshetra in my bag. That was of 5 to 6 months back, and while I was traveling, I was not having anything to do in the journey. Then I took out it and started reading it. I packed it. Then when I went to the in exam hall, then I saw one question was there on essay that was a school dropout. That was the exactly same that they have picked it from there. It was so easy for me, but I was having so much data because I have read recently. So to refine it means answer writing skill that I have learned helped me a lot. Plus, I have to add so many dimensions that I talked about you. So it was so much hard for me to put that much data, that much content into 600 words. But answer writing skill अगर आप करोगे, practice करोगे तो gradually आ जाएगा. I think so. That was a problem of plenty. You knew so much, but luckily you had that skill to filter out. Well, that's good. I think that was a message from the God when you were traveling that Akash इस बार आपका होने वाला है. ठीक है. तो ठीक है. हमने काफी कुछ डिस्कस किया आकाश. I'll move to the interview stage. Before that, I just want to ask you कि mock test की क्या importance है? आपने कितने mock test दिए? कब दिए? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? मैं सच कहूंगा तो शायद ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को प्रेज कर रहा हूँ, बट लेट मी बी क्लियर एंड ब्लंट इन दिस. अगर मैं पिछले 3 साल के मॉक टेस्ट उठाऊंगा, अगर मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ तो आई थिंक ये मेरी हाइट के बराबर आएंगे, एंड आई एम 6 feet. दैट मच आई हैव गिवन मॉक टेस्ट. अगर उसे नंबर में काउंट करें तो 15,000 questions approximately I have solved, and I think more than 40 to 50% of the questions were related to this sector only: economic, social, rural development, basics and all. And then talking about the mains answer writing, as I have already told you, without practice, no one is going to get anything. When I look back to my first answer when that I wrote when I started my preparation, I used to laugh at it. What rubbish I have written! I was so proud of it. But throughout the journey, gradually one will learn. So talking about the mock test, no matter from where you are solving the mock test, but mock test करना बहुत जरूरी है. You have to solve mock test. कैसे भी करना है. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ भी, बट यू हैव टू सॉल्व. तो गाइस ये पॉइंट नोट कर लीजिए. बहुत अच्छे से समझाया है आकाश ने कि उन्होंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं क्योंकि हाइट के बराबर पहुंच जाएंगे अगर उनको पाइल अप करेंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी इज ट्राइंग टू गिव टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट. तो प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, सोर्सेस को कम रखिए, रिवाइज कीजिए. कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार सभी लोग बताते हैं फिर भी फॉलो नहीं करते हैं. ये बेसिक्स हैं, सैनिटी चेक्स हैं जो आपको करने होंगे अपनी प्रिपरेशन.
Now, Akash, moving on to the interview. I would like to add one thing in it. हाँ, जब एक मतलब हर साल मेरा जो पाइल अप हो जाता था एंड मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता था तो आई यूज्ड टू सेल इट आउट बिकॉज मैं उन्हें देख के डिमोटिवेट नहीं होना चाहता था कि इतना मैंने पढ़ लिया स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक एनीथिंग आई यूज्ड टू सेल इट आउट आई हैव नथिंग आई हैव नो बेस आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच मींस you have to make yourself that you have to start from scratch again and again means you have to fall again rise, you have to fall again rise, then only you can succeed. Well said, Akash. Well said. I think that's a true motivation. दिक्कतें सबकी जिंदगी में आएंगी. You will feel demotivated many days in your life. But the point is that you have to motivate yourself. You have to give strength to yourself. You have to dream big. Get up next day and work towards achieving that dream because that is life. Exactly. I would add one or two things, 2-3 things in this also, because most of the people who get into the service, जब वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं, मैंने बहुत कम लोगों से इस बारे में सुना है. मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा कि देयर वर डेज जहां मैं शायद 2-2 दिन नहीं सो पाया हूँ बिकॉज समझ नहीं आता था कि चल क्या रहा है लाइफ में. बट आफ्टर 2-3 डेज आई हैव टू अगेन गेट अप. मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे फिर से फोकस करना है. ये जो प्रोसेस है हर हफ्ते हर महीने चलता रहेगा. यू हैव टू गो थ्रू इट. बट आई वुड से वन थिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, गो अहेड, डोंट लिसन टू एनी. बहुत बहुत मजा आ रहा है आकाश आपसे बात करके. So he's talking straight from the heart, guys, and I think there is no bigger motivation than to see Akash saying that though he has cleared NABARD grade A, but there has been phases in his life where he was not able to sleep for so many nights. So that's the harsh reality of life. Everyone faces, not only Akash. So yeah, even 2 months back I was also not able to sleep 2-3 days. और आई थिंक आकाश ये लाइफ का पार्ट है. अभी आप नबार्ड में जाएंगे, नई दिक्कतें आएंगी लाइफ में, प्रोफेशनल नहीं तो पर्सनल लेवल पे आ जाएंगी. सो we have to build that inner strength to fight this out because again but I found the way to deal with it. I found the day, and the way was reading novel, because I read, I mean in past 1 year I read 6 to 7 novels. That helped me a lot. At least one novel kept me calm for 15 to 20 days. And other things might work for other people, like gym, like meditation and all. We have to find our own motivation. We have to find the ways by which we can make ourselves calm. ग्रेट. तो हाँ, वो स्ट्रेस बस्टर होना बहुत जरूरी है बिकॉज उससे आपको लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग. आकाश, अब इंटरव्यू पे आते हैं. इंटरव्यू आपने जो दिया वो कहाँ हुआ था, कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा दिल्ली रीजनल ऑफिस में हुआ था एंड आई वाज द थर्ड पर्सन टू गो. एंड वो लगभग 25 से 30 मिनट चला होगा. 25-30 मिनट. तो what were the main areas that they asked you or tested you upon in the interview? मैं शुरुआत से ही बताता हूँ. लाइक जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया इंटरव्यू सेशन के लिए, इवन दो आई वाज प्रिपेयर्ड, आई वुड बी एबल टू डील विद इट, बट कुछ एरियाज होते हैं जिन पर स्टिल हमें काम करना पड़ता है. लाइक इफ आई एम गोइंग टू द नाबार्ड इंटरव्यू, देन आई हैव टू नो अबाउट द नाबार्ड इन डिटेल. आई हैव टू नो in detail each and everything, what NABARD is doing, for what NABARD is there. Then for that portion I went through that is annual report. I made short notes from the annual report. I revised them 4 to 5 times, and then I went through the website also, because annual report is like आधा है वो. अगर आपको वो पूरा करना है, then you have to go through the website also. और ये मुझे कहाँ से पता चला? I went through the EduTap mock interview. That was the one of the best interaction I have had, and I think शायद उसी की वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से हुआ था. और मैं जब इंटरव्यू पैनल से बाहर निकला था, I was smiling a lot. क्योंकि whatever was asked in the EduTap interview session, I think 50 to 60% of the questions were the same. जो उन्होंने पूछे थे. लाइक आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों की, आपकी सिविल इंजीनियरिंग कैसे नाबार्ड में हेल्प करेगी एंड ऑल. That's how it went. Mock interviews are also something that we should prepare seriously. Yeah. Like mock interview ने बताया मुझे कि आपने जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया है वो आधा है. You have to go through website also. I was thinking annual report would be sufficient, उसमें सब कुछ होगा. नहीं, जब फिर मैंने 2 से 3 से 4 दिन मैंने आराम से वेबसाइट को दिया, then I came to know कि नहीं,
You have to see this also. नाबार्ड की वेबसाइट भी पढ़ना जरूरी है। इंटरव्यू में उन्होंने आपसे पूछा क्या? ठीक है, ये हाँ, अब एक क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों की, कैसे फायदा करेगी, और क्या पूछा? एचआर से रिलेटेड, आपकी स्टेट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड? no questions was from my state. एग्रीकल्चर से रिलेटेड was एक क्वेश्चन था जो कि ये था कि एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है इंडिया में, और फिर जो फॉलो अप क्वेश्चन हुए थे वट एवर जो भी मैंने बोला था उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन थे। लाइक मैंने जो बोला था उसमें बोला था कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में उनको थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है, उसमें जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस बहुत हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस क्या है, उसको कैसे डील करना है एंड ऑल लाइक। फिर एक सर थे, उन्होंने पूछा कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे चले गए, उन्होंने पूरा इकोनॉमिक सेक्शन पे पूछा लाइक RIDF एंड NIIF में क्या डिफरेंस है, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना परसेंटेज है एंड ऑल लाइक दैट दे आस्क्ड मी। सो वर देयर एनी क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू जिनका आंसर आप नहीं दे पाए? आई थिंक एक दो क्वेश्चन थे, उसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं है। लाइक वन क्वेश्चन वाज देयर रेट ऑफ रिटर्न, economic rate of return he was asking, but I have not specifically read about economic rate of return, but I have read about rate of return, so I got confused. Then I politely said, sir, I don't know, I do not know about it. And then he said कि अरे आप फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहे हो, आपको इतना तक नहीं पता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। देन चेयरमैन सर सेड इट्स ओके यार, मीन्स कॉर्डियल रहने वाला है, ऐसा नहीं, बहुत कॉर्डियल था, मतलब आपको वो इतना परेशान नहीं करेंगे, अगर तो आपको नहीं आता तो वो चेंज कर देंगे पूरा डायरेक्शन। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर टेक, what is that 2-3 things that they're looking for a candidate in the interview? You have to be truthful because integrity is must. The last question they asked me was whether you are going to write UPSC or not, or if you get selected whether you will leave or not. Then the truthful answer was that definitely I'll write, and if I get the opportunity I'll leave for sure. And I said bluntly, and I was so worrying whether because ऐसा आंसर देना बहुत रिस्की होता है। बट आई न्यू बिकॉज द चेयरमैन पैनल जो पैनल है बहुत एज्ड हैं, वो जानते हैं कि अगर मैंने थोड़ा भी झूठ बोला तो उन्हें पता चल जाएगा कि ही इज नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और जो मैंने ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है वो मार्क्स कम हो जाते हैं ड्रास्टिकली। सो दैट वाज आई थिंक इंटीग्रिटी इज मस्ट, एंड रेस्ट यू कैन अचीव, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। Fine, Akash. I think you have very elaborately told about your experience in the interview. Anything else, Akash, that you would like to share with the aspirants that I might have missed upon? I don't think so. Just I'll repeat three things: patience, wait for your turn, perseverance, do hard work even if nothing comes to you, and dedication. That is what I'll say. That is what I'll repeat again and again. Failures are must. Failures are must. Thank you, Akash. It was really nice talking to you. And guys, remember these 3 keywords: patience, perseverance, and dedication, hard work. That is the key to success as per Akash. और अपनी sources को limited रखिएगा, revision ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और लाइफ में टेंशन आती रहेंगी, बुरे दिन आते रहेंगे, मजा इसी में है कि हम उससे लड़ें. We should have that inner strength to fight with it and get up next day and be again on the same path that we have chosen for ourselves. Thank you, Akash. It was really nice talking to you. I wish you best of luck for your future career in NABARD. और बहुत अच्छी organization है, और I think it's a commitment to the nation by serving the agriculture sector by serving the rural economy. I hope by the time you retire, the share of agriculture in our GDP shall increase at least by another 10 to 20%. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me opportunity. I will try to give my best in every area that I get throughout my life. Thank you, sir. Thank you, Akash.